Yashwant, let me just come to you with that. The impact. Now, the professors have said that the optical impact is not much, but RPN Singh might be able to get some votes or some uh, 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 caste arithmetic right for the BJP in Purvanchal. But will this transfer of votes happen with RPN Singh? Because we also spoke about how he's not perceived as a backward leader, although he is one. And I think he did lose the last election to Swami Prasad Maurya. Well, I think he is bang on. I mean, Badriji, that he doesn't bring along as such the caste equation. I believe this has more to do with the perception battle. I mean, since Swami Prasad Maurya went in the narrative in the media and everywhere, अरे लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं. तो वो नैरेटिव उनको ब्रेक करना बहुत जरूरी था. मुलायम सिंह यादव की बहू आ गई, आरपीएन सिंह आ गए, दो चार और भी खींचतान करके लाए जाएंगे. तो वो क्या है कि एक की बड़े हाई प्रोफाइल नाम हमारे यहाँ से जा नहीं रहे, बाकी जगहों से आ रहे हैं. I think Hmm. this is also to kind of nullify, because as Badriji just said, I actually do not consider, uh, just like, to be honest, I do not even consider Swami Prasad Maurya a big leader in the entire Purvanchal region. I mean, Hmm. he is just a leader of few districts. Actually, to be precise, three districts. Let me be very brutally upfront. Hmm. Similarly, in fact, in terms of impact, RPN is not even a district leader. He is a single district, two or three assembly segment kind of impact leader. But yes, the sometimes the narrative, building. For example, all said and done, Jitin catching and making Jitin Prasad as the face, a Brahmin face, I don't think that has added Brahmin votes to the BJP. You know, Hmm. uh, coming from I mean, his father was supposed to be a great Brahmin face. That's fine. Jitin is a nice guy. He has won, been a minister, was a good asset for the Congress. Congress could not keep him. That's a loss for the Congress. Just like, what he just said, that we cannot say Jitin is a great input to the BJP. It is a Hmm. great loss to the Congress. Same goes with the RPM. He may or may not bring anything to the BJP, but he is a great loss to the Congress. Having said that, in election season, narrative is what matters. Swami Prasad Maurya, the way the narrative was built around her, BJP actually panicked. If you look into around the kind of Allah Gulla that happened around Swami Prasad Maurya, because for all practical purpose, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था. फर्क ये पड़ना हाँ. था दीदी कि बीजेपी की प्रॉब्लम पूर्वांचल की देखिए दूसरी थी. बीजेपी की प्रॉब्लम पूर्वांचल की क्या हो रही थी? एक बड़ा नेता, जैसे आप कहें कि अगर अपना दल बीजेपी को छोड़ के चला गया होता, आई वुड हैव कंसीडर्ड दैट टू बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर द बीजेपी, बिकॉज पूरे पूर्वांचल और अवध के कई सारे जिलों में कुर्मी वोट्स हैं उनके पास में, एंड दैट वुड हैव बीन अपसेट फॉर द बीजेपी. बट अनलाइक आरएलडी, लाइक इन द ईस्ट वेस्टर्न साइड, की एक है जो जाट की पार्टी है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में पूरे वेस्ट में, ऐसा इनमें से और कोई नहीं है. लेकिन समस्या क्या हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 3 जिले में काम लगा देंगे, कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, ओम प्रकाश राजभर लुटिया डुबो देंगे 3-4 जिले में, और कोई आ गया निषाद वाले अगर नाराज हो गए तो 3 जिले खा जाएंगे. तो 3-4 जिले जब आप ऐड करते हैं तो वो संख्या 10-12 जिले की हो जाती है. तो Okay. जो बीजेपी की जो समस्या थी वो ये बड़े हैमरेज की नहीं थी, मल्टीपल माइक्रो हैमरेजेस की थी. और वो एकदम से वो नैरेटिव में लगा, अरे यहां भी चोट लगी, यहां भी लगी, यहां भी लगी, यहां भी लगी. तो आप ये समझिए कि मल्टीपल माइक्रो हेमरेजेस के लिए ये मल्टीपल छोटे छोटे बैंडेड्स हैं जो अब बीजेपी कर रही है, कि मुलायम Uh, सिंह यादव की बहू को ले आए, एक बैंडेड यहां लगाओ, एक नैरेटिव का आज आरपीएस का दूसरा बैंडेड यहां लगाओ. ये तमाम बैंडेड चिपकाए जा रहे हैं. इन सब का कोई कोई बहुत वैसे और मायने नहीं है. लेकिन हाँ, लड़ाई चुनाव में परसेप्शन की होती है और उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. इस नाते तो ऑप्टिक्स में आप कह रहे हैं यशवंत, ऑप्टिक्स में आप कह रहे हैं कि फर्क फर्क पड़ेगा. जो एक नैरेटिव बन गया था कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी, तो बैंडेड्स लगा लगा के बीजेपी हम लोगों को बुला रही है कि भाई आ जाओ,
हम ऑप्टिक्स बदलना चाहते हैं, नैरेटिव बदलना चाहते हैं. Narrative is around Yeah. an upper caste chief minister ignoring, neglecting the backwards and depriving them of the welfare schemes, of the quota, and the census that they were demanding. So the narrative is that somewhere a Rajput leader, he has been as casteist as he accuses Akhilesh Yadav to be for for Yadavvad, and the backwards have suffered. Now, if this narrative gains ground that the OBCs have suffered during Yogi's rule, then it is going to be a game changer. Now, if you observe, I'm just observing, I don't know if I'm right or I'm wrong here. It may be just a coincidence, but of late, all the joinings that have done, Keshav Prasad Maurya has been there. Other people have been there, but I did not see Yogi in any of those Absolutely. joinings. So, Yeah. is it a deliberate move to not to project Keshav Maurya as the chief minister candidate, but for some time withdraw Yogi from the scene so that the backward consolidation does not happen? This is just a gut feeling. I'm not very sure about it. Perhaps Yashwant and Badri can also add to it. But I have a feeling that BJP, if they have anything disturbing them right now, is the consolidation of OBCs, which can work as an antidote to Hindutva and which can be actually very harmful in East UP, especially in East and the central part of